तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया हूँ विद अ न्यू वीडियो ऑफ एलिमिनेशन मेथड, लॉजिकल एनालिसिस, कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग, वट एवर यू वांट टू से यू कैन कॉल. But the main motive is to first see how to approach the prelims question paper. The approach will decide how you will arrive at the correct answer, because knowing more than 35 questions straight away is something achievable, but nobody knows 60, 70, 80 questions correct. We have to arrive through lots of permutation, lots of combination, lots of reasoning, logic, common sense, application of method, everything we have to apply. So knowing this method, if you are not well versed with this, will surely help you. Question number 61. The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? Statement 1 is burrowing animals and termites, second is fire, third is grazing herbivores, fourth is seasonal rainfall, and fifth is soil properties. Now, what does question want to convey? Question is asking you why in savanna, in some area there is no plant, and also where there are plants, there are grassland, there are scattered small trees. So some condition would be there which is resisting to like have trees on all the areas or having large trees. So some condition would be limiting that. So that limiting condition you have to find. The first statement says burrowing animals and termites. Termites, burrowing animals, etc. They moreover stimulate plant growth. Some kind of they will act like detrivores, and then it will stimulate further growth. It is not something which is negative. Fire, yeah, fire can act as a limitation. Grazing herbivores, yeah, grazing herbivores can act as a limitation. Seasonal rainfall, yeah, if there is rainfall is very scanty, it is very seasonal, then the plant growth will be limited. And then the fifth statement is soil properties. Now we will see the options. So 1 and 2, burrowing animal is not a limitation. Burrowing animal is not a limitation. Now we are left with either 4 and 5 or 2, 3 and 4. So fire, grazing, herbivores, seasonal rainfall, all seems correct. So even if you are stuck at soil properties, still all these three we have found three common sense, so we can arrive at. This can confuse you a bit, but if you will properly apply logic, this will be correct. And these logics I have applied in the exam condition. In this question, the same logic I had applied to arrive at the correct answer. Okay, this question number 62, I am not telling you any logic, but just to inform you, so that in future if some options is framed by UPSC, then you have the requisite information. So with reference to the water on the planet Earth, consider the following statements. See, learn this sequence. Oceans have most amount of water, that there is no debate on this. Ice caps and glaciers have second most amount of water on this Earth planet. Third is groundwater. Fourth are lakes. Soil moisture come next. Atmosphere comes next. Streams and rivers are even below the amount of water which is there in soil moisture and atmosphere. And lake, soil moisture, atmosphere, streams and rivers, this is something which you need to memorize. And with the use of this knowledge, this is given in NCERT, so you all should remember this. Maybe in the future as well they may ask you some question, because this has been repeated by UPSC already. There is a limited amount of knowledge in geography, history, so things will get repeated. And if it is PYQ, then in option, in some or another form, it can get repeated. Consider the following statements. Moringa drumstick tree is a leguminous evergreen tree. Okay. Tamarind tree is endemic to South Asia. Okay. In India, most of the tamarind is collected as minor forest produce. Okay. India exports tamarind and seeds of moringa.
So if seeds of moringa tamarind can be used in the production of biofuels. Now we'll apply some logics. Moringa, if you don't know like the English name, go to the Hindi. And Sahajan. Sahajan to you all know. Sahajan is a leguminous tree. Leguminous, what is the meaning of leguminous? Leguminous are mostly having, they have the leguminous plants na, mostly have seeds. And when seeds are dried, they are used as pulses, etc. They can be used as pulses, grams, etc. So Sahajan do not have seeds and it cannot be used as grams. So this is wrong. This is wrong. आप हिंदी में आप जा सकते हो and you can see the translation. Sometimes it does help, sometimes it makes the situation even worse. So first is जहाँ जहाँ पे भी ये आ रहा है उससे ये correct answer. You arrive at the correct answer. Moreover, there are more logics. This endemic thing na, most of the time it is wrong. Most of the time. In the same question paper, twice it is wrong. Palm oil, Southeast Asia, it was wrong. Tamarind tree, endemic to South Asia, it is also wrong. Indigenous but not endemic. Tamarinds are found in many other places in the tropical Africa. So this is not something which is endemic to South Asia. So this logic also you could have applied. And here in the fifth statement, seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofuels. So can is used, so fifth statement can be correct. So there are several ways through which you can apply the logical method and arrive at the correct answer. These are simple questions. Simple. Here you have to gain the knowledge. What is mitochondrial DNA and how through mitochondrial DNA child inherits diseases, etc. There is pro-nuclear transfer. It was asked earlier. So PYQ, if you would have read pro-nuclear transfer, how the nucleus is taken and the faulty nucleus is taken and then replaced before the in vitro fertilization of egg. So this is the process, and it is done with the when it is fertilized before zygote formation. This process is done, and as the process of this fertilization happens, the mitochondrial DNA, the amount of that in sperm is very less. So that is why it is being transferred mostly through entirely through mother, because it is very less in the amount. So that is why you had to understand the PYQ themes. They are very important to understand. So there is a knowledge which can be used. Question number 67, Bodyguard 1 and Bodyguard 2 technologies are mentioned in the context of anything na 27, 28, mustard 35, 36, and this seems to be something, some kinds of microbe or something. So if there is some number etc written, most of the time it is related to GM crops. So you can remember this trick, and most of the time it will be correct. Bodyguard 1, Bodyguard 2. You know that there are processes. Genetically modification means what? You insert certain DNA into the plants, and through that you want to showcase certain property which is useful for the growth of the plant, which builds its defense mechanism, and for that this process is done. 68 question. This was asked in UPSC earlier, and here you have to understand the concept how pressure cooker works. So the area of the hole in the lid will be more, the pressure जो है steam जो है वो बाहर आ जाएगा. So if area बड़ा हो तो steam जो है वो ज़्यादा बाहर आ जाएगा. तो जो टेम्परेचर है फूड को कुक करने का वो उसको अफेक्ट कर देगा, है ना. एंड वेट ऑफ द लिड, जितना हम उस पर प्रेशर ऊपर से डालने की कोशिश करेंगे, जितना वेट ज़्यादा होगा उससे भी जो कुकिंग प्रोसेस है वो चेंज होगा. प्रेशर का एक फॉर्मूला भी होता है, फोर्स बाय एरिया. टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, सी एवरीथिंग लाइक हैज़ अ फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है.
अब इन प्रेशर कुकर यूजुअली 121 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इट कैनॉट गो, and the usual boiling point is of water is 100 degree. So it will not affect it. It may impact the cooking time, but it will not impact the temperature, because beyond that it cannot go. But इसमें बहुत सारा लड़ाई हुई थी और बहुत इश्यूज हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करो. 69 questions straight from PYQ. Consider the following: bacteria, fungi, virus. Which of the above can be cultured in artificial synthetic medium? Remember, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था in the examination. क्यों गलत हुआ था? I had read some extra reading. I had read some science direct research, some research paper. On that research, they were working on manufacturing of virus through synthetic medium. अब वो माइंड में स्टे कर गया, बट इन द NCERTs, in all the basic books, in the PYQ, it was straight away written that virus cannot be cultured in artificial and synthetic medium. So always remember, don't go for researches, etc. They will confuse you. Always stick to the basics. They take also like answers from either from PYQ or from NCERTs or from some respected sources, not through research, etc. So बेसिक्स पे ही काम करना है. ये आंसर था इसका. क्वेश्चन नंबर 70th. Consider the following statements. Adenovirus have single-stranded DNA genome, whereas retrovirus have double-stranded DNA genomes. Second statement: common cold is sometimes caused by an adenovirus, whereas AIDS is caused by a retrovirus. अब ना, when this two things are compared, and there is two statements, 80% of the time one will be wrong. They will interchange. It is a very easy method to confuse you. It is very easy to manipulate you. Now, common cold is caused by adenovirus. It was in news because adenovirus was used to manufacture the Covishield. और फिर next year फिर Covishield पे क्वेश्चन आ गया, तो interrelated हो गया, क्योंकि उन्होंने they would have seen PYQ and they would have framed questions. ठीक है, AIDS is caused by retrovirus, बट यहाँ पे मैनिपुलेशन का पूरा चांस था. एडेनोवायरस डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंड जो अपना रेट्रोवायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जेनोम होता है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी डेंजरस आल्सो. ओके, सो द करेक्ट आंसर वाज बी. ये देखना, ये इंटरचेंज होने का चांसेस रहेगा, एंड 80% एक स्टेटमेंट तो गलत होता ही होता है. इजी क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72. With reference to street lighting, how do sodium lamps differ from LED lamps? First of all, sodium lamps देखिए ना, स्ट्रीट लाइट्स में यू वुड हैव सीन वो येलो कलर की लाइट वैसे पूरा गोल जैसी हो ऐसी रहती है, एंड लगाया इसलिए जाता है क्योंकि उसका जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है, तो स्ट्रीट्स में वो लगाई जाती है. बट लाइट काफ़ी येलो सी होती है, एंड इट्स नॉट एज लाइक कलरफुल एक्सेट्रा. जैसे एलईडी में तो येलो है, ग्रीन है, वाइट है, ऑरेंज है, कुछ भी है, एनीथिंग है. बट एलईडी यू वुड नॉट हैव सीन ऐसा जिसमें कि यू विल हैव अ 360 डिग्री काइंड ऑफ कवरेज. वो अगर वॉल के इस तरफ डायरेक्ट कर रही है तो उसी तरफ करी, पीछे की तरफ उसकी लाइट नहीं आती है. तो इसी बेसिस पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पे क्वेश्चन था. First statement is sodium lamps produce light in 360 degrees, but it is not in the case of LED lamps. Yes, perfect. You have seen LED lamps. They do not have the ability to like spread 360 degree चारों तरफ. As street light, sodium lamps have longer lifespan than LED lamps. LEDs are preferred because they have longer lifespan. This was the reason why this CFL came and then LED came. There were 2-3 advancements that they had done. One was energy efficiency. Now this 180 degree of LED lamp is also because एक ही डायरेक्शन में आपको एनर्जी देनी है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करा, इससे भी एनर्जी एफिशिएंसी होती है. टारगेटेड लाइट देना, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो लाइफ टाइम होता है, वो भी ज़्यादा होता है, तो इट बिकम अफोर्डेबल एज वेल क्योंकि लाइफ साइकिल ज़्यादा हो गया. सोडियम लैम्प और ये सब में बहुत इशू क्या, ख़राब होती रहती है. आपने देखा स्ट्रीट लाइट तुरंत ख़राब हो गई और वो दिक्कत होती है उससे. Spectrum of visible light from sodium lamp is almost monochromatic, while LED lamps offer significant color advantage in street lighting.
इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, येलो येलो कलर के होते हैं वो ज़्यादातर, तो आंसर वो सी। The term ACE2 is talked about in the context of genes introduced in the genetically modified plants, development of India's own satellite navigation system। ऐसा कोई AEC2 करके कोई नाम थोड़ी होता है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का। रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, ये भी कुछ बैठा नहीं। ईदर इट इज स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज और इट इज जीन इंट्रोड्यूस इन दी genetically modified plants। It was in current affairs, it was related to COVID-19 and that is why it was asked। सो ये क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स का था, बट 50-50 तो आप नाम से जा सकते हैं। ट्रैप क्वेश्चन, ट्राइक्लोसन, with any kind of logic you would not arrive at toiletries. If you know, you could have answered it. Question number 76, which one of the following is a reason why astronomical distances are measured in light years? ठीक है, distance among stellar bodies do not change। अच्छा, gravity of stellar bodies do not change। they are talking about astronomical distances, gravity कहाँ से आ गया, stellar bodies के बीच में ये थोड़ी it is used, ठीक है, कुछ और stellar bodies के अलावा भी can be used, ठीक है। so light always travels in straight line, ये भी कुछ बैठा नहीं, straight हो रहा है इस वजह से नहीं। speed of light is always same। for a measuring rod टू बिकम अ मेजरिंग रॉड, अगर लीटर की वैल्यू फिक्स नहीं, केजी की वैल्यू फिक्स नहीं है, अगर सेंटीमीटर की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो फिर वो मेजरिंग रॉड क्या है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी अ मेजरिंग रॉड इज दैट द कन्वर्जन शुड बी फिक्स्ड। इफ कन्वर्जन इज नॉट फिक्स्ड देन इट कैन नॉट बी अ मेजरिंग रॉड। सो एक बेसिक चीज जो है वो होती है कि सेम हो, कांस्टेंट हो। इसी वजह से आंसर जो डी था। पता नहीं, ये भी क्वेश्चन गलत करके आए थे काफ़ी सारे लोग, ज़्यादा ओवर थिंक करने की वजह से हो जाता। एग्जामिनेशन में एनीथिंग इज पॉसिबल। ये तो क्वेश्चन नंबर 77 इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन। 78 बहुत टफ क्वेश्चन, नेगेटिव ही देखे गया। राइट टू प्राइवेसी अगेन पुट्टू स्वामी पूछा, फिर पूछ दिया PYQ। अब देखिए कारनामे, देखिए UPSC इज मे बी सुप्रीम फॉर मैनी बट इट इज़ नॉट इनफेलिएबल। ये क्वेश्चन ड्रॉप किया UPSC ने 80, कुछ भी अनसन इन्होंने पहले क्वेश्चन बनाया, उसके बाद दे ड्रॉप्ड इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, consider the following statement। right to city is an agreed human right and the UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard। okay, don't know। right to the city gives every occupant of the city right to reclaim public spaces and public participation in the city, ठीक है। right to the city means that the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city। अब ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, जिएंगे मरेंगे तो एक साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये भी बोल रहा है कि every occupant of the city have the right to reclaim public spaces। अब जब एवरी हो गया तो फिर अनऑथराइज्ड कॉलोनी वालों को कैसे छोड़ दोगे? ठीक है, तो ये दोनों तो एक साथ सही होंगे। अब ये दोनों एक साथ सही सिर्फ डी ऑप्शन में, सिर्फ इससे ये करेक्ट आंसर आ गया। इससे कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ये कोई ट्रिक नहीं है, स्टेटमेंट को समझो एंड अब वो स्टेटमेंट भी तो कहीं से उठाया होगा। और इफ इट इज टॉकिंग अबाउट अ वन टॉपिक, इट इज टॉकिंग अबाउट वन थिंग, तो कोरिलेशन होना, तो मतलब वो निकालना भी चाहे तो बहुत बार विजिबल हो जाता है। ऐसे दे ट्राई टू बिकम कनिंग, और वो हमें करना चाहते हैं, तकलीफ में डालना चाहते हैं, बट निकल जाता। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First statement is judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. Okay. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. First of all, when judiciary is mentioned, there are two types of custody: police custody, judicial custody. जब न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी होती है तो जेल में जाते हैं, पुलिस कस्टडी होती है तो लॉकअप में रहते हैं। अब ये दोनों आपस में ही मेल नहीं खा रहे हैं कि अगर जुडिशियल कस्टडी में इंटरोगेट करने के लिए भी अप्रूवल ऑफ कोर्ट की आवश्यकता है, सो हाउ, मतलब फिर वो क्यों पुलिस स्टेशन में क्यों है? पुलिस स्टेशन मतलब ये कंट्रोल में है, तो ये दोनों तो एक दूसरे के कोरोलरी स्टेटमेंट हो रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको उतना नहीं भी पता था तो या तो ए होता या बी होता, सी डी होने का तो कोई मतलब था नहीं, विद द यूज ऑफ कॉमन सेंस ऑल्सो। वैसे इतना आपको बेसिक चीज़ें यू शुड नो।
With reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his her right. Parole is never a right. Parole is never a right. ओके ऐसी चीज़ें राइट नहीं है. राइट होती तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल रूल्स. प्रिजन के अपने रूल हैं. स्टेट प्रिजन जो है वो अपना एक स्टेट सब्जेक्ट है, अपने मैनुअल्स होते हैं, अपना सब रूल होता है, इसलिए अलग अलग गड़बड़ झाला, कहीं ओपन प्रिजन है, कहीं कुछ है, तो इससे तो आप 2 only पे आ सकते थे. ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है. दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन इन द सेंस अगर आपने PYQ नहीं किया है, अगेन PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया था. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है. FRA कई लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लगा दिया था इसमें. इजी क्वेश्चन. आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर. अब फेडरलिज्म जैसे ही मेरे आपके दिमाग में आए तो आपको वो 6-7 जो पॉइंट है ना, बाई कैमरल, डिविजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितनी चीज़ें हैं ना आपको, ये आपके माइंड में आ जानी चाहिए. ठीक है, जैसे फेडरलिज्म की बात हो, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए. अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड. हाँ, एक है वन ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. क्या फर्जी है, बिल्कुल ही कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कार्ड देना चाहिए इसको देखते हैं. द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रीजनल पार्टीज. वैसे ही कुछ भी फ्रेम्ड है. ठीक है. द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ. जो मरे हैं ना लोग, वो A और D में फंस के मरे हैं. ठीक है. बट अगर जिनको पता था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जब होगी तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिपेंडेंस जुडिशरी है तो इन्फोर्सेबल तो होता ही है. ठीक है. ये बिल्कुल एसेंशियल एलिमेंट है जो कि डायरेक्टली लिखा हुआ था, तो ये आपको बिल्कुल एसेंशियल फीचर में 6-7 फीचर जो अगर आपको याद है तो इट वाज अ इजी क्वेश्चन. नहीं याद है तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट. स्टेट जब मैं बोलूँ, लक्ष्मीकांत ने दिया 4 एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवरेनिटी. अब जिस भी डेफिनेशन में चारों नहीं, वो रॉन्ग है. अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मतलब पॉपुलेशन आ गया. परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनिट टेरिटरी आ गया. इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, सोवरेनिटी आ गया. एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट आ गया. चारों चीजें सेटिस्फाई. ऑप्शन बी, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल. पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज का कोई मतलब बनता नहीं है. ठीक है. नेशन का कुछ थोड़ा सा टच आ गया इसमें. पीपल ऑफ अ डेफिनिट टेरिटरी, चलो टेरिटरी आ गया इसमें. पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम. ठीक है. मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल लाइफ एंड सेफगार्ड देयर मींस ऑफ सस्टेनेंस. एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहाँ गई भाई? एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहाँ गई? इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोवरेनिटी होती है. ठीक है. वो इसमें है ही नहीं. और ये C और D तो पढ़ के मतलब टाइम वेस्ट ही होगा. क्वेश्चन नंबर 88. अब UPSC ने यहाँ रॉन्ग आंसर दिया. अब क्या मतलब बताओ ना. अपने 2.66 का नुकसान कर दिया. किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का करियर अपने 1.5 साल कोई चला गया होगा छोड़ के प्रिपरेशन में. अब ऐसे ऐसी बचकाने मतलब गलतियां कर रहे हो. एक जगह आपने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है. ठीक है. यहाँ 2.66 का गड़बड़ झाला, वहाँ 2 नंबर आपने उड़ा दिया. 4.66 आपको ये सब चीज़ें जो PCS का और बुरा हाल है. 7 क्वेश्चंस डिलीटेड, 8 क्वेश्चंस डिलीटेड, रॉन्ग आंसर, क्लेम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. वी आर स्टूडेंट्स, वी आर मेकिंग 4,000-5,000 क्वेश्चंस. ठीक है. वी आर नॉट प्रोफेसर्स. We can make 4,000-5,000 questions, and these people who have committee of 15, 20, 25 people, whole year they are working and making 100 questions, and still they are not able to make 100 questions which are not having any kind of error. So this is a matter of concern. A High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. Yes. 2021 also. जुडिशरी हैड रिएटेटेड दिस. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का भी ये बेसिक चीज़ है. वो अपनी जजमेंट को देख सकते हैं, और ये तो फिर कोर्ट ने भी बोला था. तो पता नहीं क्या है, कैसे इन्होंने अपना हिसाब लगाया. क्वेश्चन नंबर 89. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देयर इज ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल. यस, करेक्ट.
सिटीजन, ये भी एक फेडरल का कैरेक्टर होता है कि डुअल होनी चाहिए, यहाँ पे है नहीं। सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट, ये यूएसए में, इंडिया में नहीं है। A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances, कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं होता, कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं होता, कोई भी कंट्री में ऐसा नहीं होता। इजी क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90 में, इसमें भी बहुत महाभारत हुई थी, बट आई डोंट नो क्यों महाभारत हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? ठीक है, और लिबर्टी तो आपको पता होगा ना, रिस्ट्रेंट का जो होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, ये भी क्वेश्चन, लिबर्टी क्या होती है ये पूछा उन्होंने, फिर लिबर्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, बेस्ट सेफगार्ड क्या हो सकता है, कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशरी, ये सब ऐसे टर्म्स होते हैं जो नेगेटिव हुए। मतलब नेगेटिव क्या, कमिटेड अगर ब्यूरोक्रेसी है तो गवर्नमेंट जो बोलेगा उसके लाइन पे चलेगा, तो ये तो गलत हो गया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन अगर पावर में हो जाएगा, पावर जब सेंट्रलाइज हो जाएगा तो चेक्स एंड बैलेंसेस कम हो जाएंगे, तो लिबर्टी कहीं ना कहीं जाने लगेगी, रिस्ट्रेन लगेंगे। इलेक्टेड गवर्नमेंट तो दुनिया के तानाशाह वाली जगह में भी होती है, तो उससे कोई मतलब। सेपरेशन ऑफ पावर, separation of power like United States of America. There is strict separation of power where a police officer in United States of America had warned the president of USA. This is not possible in our country or in any other country where there is not strict separation of power. When there is strict separation of power, one body can function independently and can keep a strong check on the other body. So it ensures that there is nothing जिससे ऑटोक्रेसी आ जाए, लिबर्टी खतरे में आ जाए। तो सबसे अच्छा जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। इजी क्वेश्चन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। दिस क्वेश्चन अगेन वाज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन फॉर मेनी, बट फॉर like people who have certain basics, they would not do it wrong. What is the position of the right to property in India? Legal right available to citizen only. अच्छा, legal right available to any person. Okay. Fundamental right available to citizens only, वो तो हट गया था. Neither fundamental right nor legal right, ऐसा संभव नहीं है. Okay. Now if you know foreigners, PIO, OCI, हर जगह एक वर्ड लिखा रहता है कि बारिंग एग्रीकल्चर लैंड. एग्रीकल्चर लैंड क्यों डाला? क्योंकि बाकी लैंड में तो राइट होगा ना, तभी तो ये वर्ड यूज किया जाता था. अगर राइट ही नहीं था तो वो वर्ड क्यों लिखते हैं बार बार? अगर इतना आपको माइंड में अगर याद रहता तो एनी पर्सन आप लगाते हैं. ठीक है, 92 का बी था. What was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? 1950 का मतलब है कि बाद में प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट आए हैं उसको आपको ध्यान में रखना. सेकुलर वर्ड पे थोड़ा सा बवाल भी हुआ था इधर, तो सेकुलर बाद में ऐड हुआ था, उसको अगर आप रिमूव करो तो ऑप्शन ए और बी में आप बचोगे. और सॉवरेनिटी इज समथिंग विच सोवरेन हम बने ही थे 26 जनवरी, तो ये तो होगा ही, डेमोक्रेटिक होगा ही, रिपब्लिक होगा ही. ठीक है, सोवरेनिटी तो होगा ही होगा, सोवरेन बने थे हम उस दिन, तो शुरुआत से ही रहा होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशन है तो लिमिटेशन पावर में रहती है, इसी वजह से ये स्टेट क्वेश्चन था. देखिए, हल्बी हो, कुई, ऐसी चीज़ें मतलब क्या है, मतलब कुछ लोग डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया समझ गए थे, और ट्राइबल लैंग्वेज, इन दोनों में कंफ्यूज थे, इन दोनों में तो नहीं थे. इन दोनों में कंफ्यूज हो तो फिर कुछ विशेष दिमाग चल रहा है. हो जो होते हैं वो हो, मुंडा, ये सब ट्राइब होते हैं झारखंड के. ठीक है, तो ये ट्राइबल लैंग्वेज ही थी, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर क्या होता है कि जो नाम होता है ट्राइबल्स का, वही लैंग्वेज भी होती है, वो लैंग्वेज के नाम पे ट्राइबल का नाम हो जाता है, ऐसा बहुत होता है. ठीक है, तो डांस फॉर्म नहीं था, 50-50 में भी आप कर सकते थे, ट्राइबल लैंग्वेज ही थी. ये मतलब पता नहीं ये क्यों मतलब ऐसे क्वेश्चन क्यों मतलब यूपीएससी फ्रेम किया उस ईयर, आई डोंट नो. ओके, ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन था. अब 98 क्वेश्चन देखते हैं. ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फिर बाद में आए नहीं, पता नहीं व्हाट दे वांटेड टू डू. 2021 पेपर दे वर इमिटेटिंग पीसीएस. अचानक से क्वालिटी ऑफ जो क्वेश्चन थे वो गिर गए थे 2021 में.
दे वर नॉट दी लेवल ऑफ यूपीएससी जहाँ पे कॉन्सेप्ट को झकझोरने का होता था, पता नहीं वो पीसीएस एसएससी और सबका फ्लेवर डाल दिया था इसमें. तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द Laureus World Sports Award which was instituted in the year 2000 for the sake of information for people writing PCS etc. in the coming days or months. Lionel Messi has won this year the Laureus Award. So American golfer Tiger Woods was the first winner of this award. Tiger Woods had won so many of the accolades. He is one of the best golfer of all time. So there is a chance that he would have won. The award was received mostly by Formula One players. Okay, Roger Federer received this award maximum number of times compared to others. Now Roger Federer is a tennis star. Formula One has won, players have won most number of awards. थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है इसमें. अगर ये थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो हो सकता था कि आप या तो A 1 and 2 या फिर 1 and 3 चूज करते, बट करेक्ट आंसर लाना इज डिफिकल्ट है. अगेन दिस क्वेश्चन नंबर 99 and 100 पता नहीं यूपीएससी and 2022 में these coaching centers started giving sports question straight away in their test series. बहुत सारे sports question, current affair में कई लोगों ने section बना दिया. So they are not ahead of UPSC. One thing which is for sure will work is your basic knowledge and the application of basic knowledge. The basic things of all the subjects like economy के terms हैं, clear है, हो गया. History में timelines हैं, पता है आपको टाइमलाइन कब क्या कैसे हुआ, एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट पता है, इट विल ऑलवेज हेल्प. इन्वायरमेंट में द बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक लॉज कन्वेंशंस क्लियर है, ऑलवेज हेल्प. ठीक है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देयर इज क्लैरिटी अबाउट बायोलॉजी, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ऑलवेज विल हेल्प. रेस्ट ऑफ द थिंग्स मे हेल्प, मे नॉट हेल्प. 365 ये ट्रिक फलाना ढिमकाना कोचिंग सेंटर मे हेल्प, मे नॉट हेल्प. So always work on that thing which will always help you in every attempt, in every stage of this examination. Even in interview they will ask you what is GDP, what is the difference between GNP and GDP, what is national income. They are asking this question. If you would have seen the transcript, they are asking this question because they know the basics. If किसी बंदे को basics पता है तो बाकी काम तो हो ही जाता है. ठीक है. Thank you so much. इससे हमारा 2021 का पेपर पूरा खत्म हो गया. Thank you.